Hey everyone, welcome back to Miss Muskan channel. So those who all are new to my channel, hi, my name is Muskan and I post content related to fashion, beauty and styling, and it will mean a lot to me if you spend a second and subscribe to my channel and also press the bell icon. So today's video is gonna be about menstrual cup. So in this video we will be talking about what is a menstrual cup, how to use it and some questions about that. So if you are interested then please keep on watching. मेंस्ट्रुअल कप कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है। इसमें कवर भी गिवन होता है जिसमें आप मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने के बाद रख सकते हैं। बेसिकली मेंस्ट्रुअल कप्स आर वेरी स्मॉल, सॉफ्ट एंड हैंडी। मेंस्ट्रुअल कप्स आर मेड अप ऑफ मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन विच डज नॉट रिएक्ट विद द ह्यूमन बॉडी। दैट मीन्स द वेजाइनल pH बैलेंस विल रिमेन इंटैक्ट. And the best part about menstrual cup is that you can use one menstrual cup up to 10 to 12 year. See, this is eco-friendly and budget friendly तो बहुत ज़्यादा है because ये one time investment है। आपको एक अच्छी ब्रांड का menstrual cup I guess 300 to 500 के अंदर मिल जाएगा। मैंने कुछ menstrual cup की लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी हैं, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। बेसिकली अगर हम एवरेज में काउंट करें तो हम 1 मंथ में 50 to 60 रुपीज़ पैड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है लाइक रैशेस, इचिंग और वेटनेस और पता नहीं क्या क्या। सो मैंने तो पैड्स में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। आई हैव बीन यूजिंग दिस मेंस्ट्रुअल कप फॉर 8 मंथ्स नाउ एंड अब मुझे वो सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती हैं जो मुझे पहले फेस करनी पड़ती थी व्हाइल आई वाज यूजिंग पैड्स। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू यूज अ मेंस्ट्रुअल कप. So step number 1 is to sterilize it. Before using a menstrual cup, you should sterilize it. For that, आपको एक पैन में water boil करना है and you have to put the menstrual cup in a boiling water for 3 to 5 minutes and relax. वो boiling water में menstrual cup melt नहीं होगा and after 3 to 5 minutes you will remove the menstrual cup and it is ready to use. So step number 2 is insertion. Make sure to wash your hand perfectly before you starting the process. The first thing you do is to fold the menstrual cup to reduce its diameter. अब आप इसे काफी तरह से फोल्ड कर सकते हैं, like you can fold like this, इसे हम C fold बोलते हैं, और you can fold like this, इसे हम 7 fold बोलते हैं. And then you have to put the menstrual cup inside your vaginal opening, angle towards your tailbone or bum, and relax yourself while doing this process. So release it when you realize that it fits perfectly. So basically menstrual cup creates a vacuum or a suction with your vaginal wall, keeping it intact, and that's why कोई भी लीकेज नहीं होती है. And that's how it fits between the vaginal opening and cervix and you can feel less dim. अब first time में थोड़ा सा uncomfortable लग सकता है, but after that you will realize that why this is different from pads and why this is better from pads. Empty your menstrual cup once in every 8 to 10 hours. Make sure कि आप 8 to 10 hours में अपने menstrual cup को empty जरूर कर ले, otherwise लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है because menstrual cup can hold up to 15 ml of blood. So step number 3 is how to remove it. So basically menstrual cup में एक stem given होती है. So what you can do is use 2 of your finger to twist it inside and pull it outside simply. अब ये process कुछ लोगों को scary लग रहा होगा, which is a common fear, but trust me, it will all worth it. Once you are done with the cycle, you will wash the menstrual cup and sterilize it in a boiling water for 3 to 5 minutes again, and you will put the menstrual cup in a bag and store it. Okay, so अब कुछ ऐसे questions हैं जो सबके दिमाग में आते ही आते हैं, so let's talk about that. So the question number 1 is how to select the perfect size of menstrual cup. So basically menstrual cups 3 size में आते हैं, small, medium and large, and I will recommend कि अगर आप unmarried हैं then go for the medium one, or otherwise you can choose according to your flow. So question number 2 is why switch to menstrual cup? There are so many reasons. The first one is this is activity friendly. Can you believe you can literally swim while having your periods? Number 2 is cups are reusable because you can use one cup up to 10 to 12 years. This is so eco friendly and so budget friendly, and cups are so handy, so portable and so small. And the best part about menstrual cup is that कि इसमें कोई भी smell वगैरह का problem नहीं होता है as compared to sanitary napkins. So yeah, that's it for today's video. If you have any question related to menstrual cup, do let me know in a comment section. I'll be happy to answer that. And if you find this video informative, do share with your friends, girlfriend and sisters. And if you like this video, do hit the like button and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. तब तक के लिए bye bye, stay safe.